इस डायग्राम को याद कर लीजिए। ये जो रचना है आपके सब जगह पर मिलेगी, नाखून में, चमड़े में, मांसपेशियों में, हड्डियों में। आप एक बूंद खून लीजिए, उसमें जितनी भी कणिकाएं हैं जैसे रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, जो भी हैं सब में मिलेगा। ये शरीर में कहीं भी खोजेंगे ये मिलेगा। ये इसमें देख लीजिए, ये है जो पैगंबर हैं, जो अवतार हुए हैं, पूर्ण अवतार, जिनका परब्रह्म में से ऐसे एकता है जैसे आग के साथ गर्मी। ये नंबर 1 हैं जो इनके संपर्क में रहना चाहते हैं, इनके संपर्क में रहते हैं, इन्हीं का ज्ञान इनके माध्यम से फैलता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, ये भी रियलाइज मास्टर ही होते हैं। नंबर 2 हैं मनुष्य के इंटेलेक्चुअल लोग, जो तर्क वितर्क पर काम करते हैं। इनको भरोसा है कि हम पढ़ करके जो याद करेंगे वही ज्ञान है। नंबर 3 है जंतु जगत, चौथा है वनस्पति, और 5वां है और परमाणुओं का जगत है जो दिखाई पड़ता है, सौरमंडल, आकाश, पृथ्वी आदि। इस चित्र को अवश्य याद रखिए, बीच बीच इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इस चीज को हमने यहाँ पे छोड़ रखे हैं। अब आइए, हमसे गलती क्या हो रही है। गलती ये हो रही कि हमें ऐसा लगता है ढेर सारी चीजों में सीखना नहीं है, आता है। जैसे कोई कहते देखना आता, हाँ आता है। कैसे देखते हैं? आँख खोल के देखते हैं। इसको देखना नहीं कहते हैं। जब हम देखें तो आप महान प्रतीत हो। हम देखें तो जैसे जैसे आप महान प्रतीत हो लगे हम भी महान हैं। हम आपको देखें तो हमारी वाइटलिटी बढ़ती जाए। अगर आपकी एकाग्रता हम पर है तो आपकी भी वाइटलिटी बढ़ेगी। ये देखने का तरीका ऐसे याद रखिए कि हमें मान बैठे कि हमें देखना आता है, सुनना आता है, स्वाद लेते हैं खाने का आता है, नाक से गंध की अनुभूति करते ये भी आता है, हम पैर से चल लेते हैं, हाथ से काम कर लेते हैं, आता है। झाड़ू पोछा लगाइए, आता है? हाँ आता है। आता नहीं है। हमें ये जो बहुत बड़ी गलतफहमी कि आता है और सीखना नहीं चाहते हैं हम। इसलिए हमारा लक्ष्य होना चाहिए हमेशा हम सीखते रहें। सीखना ही जीवन का लक्ष्य है। इसे कहते हैं कि हम और ज्ञान सीख करें, हम और ज्ञान सर्च करें। हम जो काम कर रहे हैं इसको कैसे करें? झाड़ू लगा रहे हैं, कैसे लगाएं? झाड़ू लगाने का लक्ष्य क्या है? छोटा काम बड़ा काम नहीं होता। पहले तो ये नोट कर लीजिए, हम झाड़ू लगा रहे हो या खेत में काम कर रहे हो या खाना बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, या हम क्रियायोग पढ़ा रहे हैं, ये जितने भी काम हैं कोई छोटा बड़ा नहीं होता। सब काम की आवश्यकता, सभी महान होते हैं। हम झाड़ू लगाएं, आता है, ठीक है आता है तो लगा के दिखाइए। तो झाड़ू लगाते समय होना चाहिए कि हमारी वाइटलिटी बढ़े, हमारी इम्यूनिटी बढ़े, हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति बढ़े कि सबसे एकता स्थापित हो, हमारे अंदर शांति बढ़े, शिकायत कंप्लेन कम होने लगे। थोड़ी देर झाड़ू लगाने के बाद हम शिकायत करते थक गए तो कहाँ आता है झाड़ू लगाना? नहीं आता है। इसलिए झाड़ू लगाना आता नहीं है। अगर झाड़ू लगाते समय हमारी वाइटलिटी नहीं बढ़ रही है, इम्यूनिटी नहीं बढ़ रही है, शक्ति नहीं बढ़ रही है, हमारी समझ नहीं बढ़ रही है, तो जो झाड़ू लगा रहे हैं हमें आता नहीं। और सीखना है। कैसे सीखेंगे हम? बड़ा सरल है, परब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं। जिस झाड़ू को पकड़े हैं वो भी परब्रह्म का रूप है। सिर से पैर की उंगली तक जिसके माध्यम से झाड़ू लगा रहे हैं ये भी परब्रह्म का रूप है। जिस पर झाड़ू लगा रहे हैं, चाहे फर्श हो चाहे जो कुछ, वो भी परब्रह्म का रूप है। क्या इस निगाह से देख रहे हैं? क्या झाड़ू को उस भावना से पकड़ रहे हैं? सिर से पैर की उंगली तक परब्रह्म का स्वरूप है। क्या हम झाड़ू लगाते समय अपने में एकाग्रता बढ़ा रहे हैं? इसके अंदर के परिवर्तनों को क्या हम परब्रह्म का स्वरूप मान रहे हैं? अगर परब्रह्म का स्वरूप मान रहे हैं तो किस तरह मान रहे हैं? परब्रह्म में अतीत, वर्तमान, भविष्य है। क्या झाड़ू लगाते समय हमको अपना अतीत दिखाई पड़ा? 100 वर्ष पहले दिखाई पड़ा? अपना भविष्य दिखाई पड़ा? नहीं दिखाई पड़ा।
तो झाड़ू लगाना सीखिए। सीखना बड़ा आसान है, बहुत आसान है। होली साइंस का पहला सूत्र, परब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं। वही फर्श है, वही दीवार है जिस पर झाड़ू लगाना है। वही झाड़ू है जिसको पकड़े हुए हैं। परब्रह्म हाथ है जिससे पकड़े हैं। सिर से पैर की उंगली तक की रचना परब्रह्म की है। जब सिर से पैर की उंगली तक इसमें जितने परिवर्तन प्रकट होते वही परब्रह्म है। और परब्रह्म में अतीत वर्तमान भविष्य सब कुछ है। उसी में बुद्धा है, महावीर स्वामी है, 24 तीर्थकर है, और कबीर साहब, गुरु नानक देव जी उसी में है, महात्मा गांधी उसी में है, जितने पैगंबर हो चुके हैं सब उसी में है। वर्तमान के पैगंबर जैसे महात्मा गांधी, लाड़ी महाशय, ज्ञानावतार गिरी, परमहंस योगानंद, सब उसी में है। उसी में सारा ज्ञान है जिसको ढूंढते हैं हम। जो ज्ञान शक्ति का रूप है, शांति का रूप है, आनंद का रूप, हम ऐसा ज्ञान चाहते हैं जिसको पाने से शक्ति मिले, आनंद मिले, शांति मिले और लगे कि हम अमर हैं। इस तरह से हम आपको फिर से याद दिला रहे हैं, हर चीज फिर से सीखिए। कैसे देखें, कैसे सुने, कैसे गंध लें, कैसे स्वाद लें, कैसे काम करें, कैसे चलें, कैसे हाथों का उपयोग करें, फिर से सीखिए। हम सीख लिए, अगर मान लेंगे तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। हम सीखते हैं। आपकी जैसे जैसे मैं सेवा करता हूं, हम और सीखते हैं। हम प्रतिदिन सीखते हैं। प्रतिदिन सीख करके बड़ा अच्छा लगता है। अगर प्रतिदिन हम सीखेंगे तो बड़ा आनंद आएगा, बोरियत नहीं होगी। सीखना कम होगा तो हम दुखित होंगे। लेट मी एक्सप्लेन क्लियरली this diagram. I request all of you remember this diagram, everyone. This is the center, this white area, except it is Parbrahma. And this near 1, 2, 3, 4, what we have seen little circle, that is the consciousness, that is the creation which is one with the Parbrahma. Like burning fire and heat in the fire, both are together. That is important. Therefore remember, you have to remember. Then first, number 1 is called the great saints and sages, who are all the time having contact with these prophet, realized masters. Then number 2, all human beings are intellectual, living life basis on the intellect, on the reasoning power. And number 3 is called the animal kingdom. Number 4, plant kingdom. Number 5, atomic and energy kingdom, like sun, like earth, like moon, like everything. Therefore, this is the universal diagram. You must remember it. Try to see the nails. Inside nail, all exist. Inside skin, all exist. Inside bone, all exist. Inside arteries and veins and lymphatic channels, lymph nodes and bones and bone marrow, they exist. Take blood. In the blood, there are so many blood cells. In each blood cells, they exist. Therefore, you have to remember this clearly. Now, after this, try to understand what is our aim of life. Our aim of life is to increase vitality, immunity every day, to feel peace and joy every day. More and more joy, more peace, more vitality, more immunity. This is the aim of life. All right. Then how to achieve aim of life? I have to learn more and more. Do you know how to see? Yes, yes, I know how to see. I open my eyes, I see all of you. This is not the way how to see. When I use my eyes to look into you, to see your existence, where you are, that I must feel more vitality, more immunity, more joy, more peace, more confidence. If I'm not feeling, then I do not know how to see, how to use my eyes. In the same way, I have to relearn how to use my eyes and ear and nose and tongue and legs and arms, everything. Therefore, how to work? Let us say, I have to clean today this floor. I want that somebody should have broom and somebody should get water and let us clean it. You know how to clean? Yes, we know it. No, we have to learn more. When you start brooming it, when you start cleaning it, then you must realize in the act of cleaning, in the act of brooming,
Whatever you are going to see, you are going to feel head to toes. What you are going to feel. When you are cleaning this floor, cleaning this wall, working here to make everything better and better, then we must realize my vitality is increasing, my peace is increasing, my joy is increasing. I feel very good. My stress tension are reducing. But what happens when you work? After some time, what we say, I am tired. I want to rest. It means you do not know how to work. Therefore, we have to relearn again how to use our ear when you are listening, how to use your vocal cord, voice box to speak. When you are speaking more and more, listening more and more, then you must demonstrate your vitality, immunity, peace, joy, all are increasing. Suppose that I am looking at you and you are looking at me, then your vitality should increase. Your peace and joy should increase. If it is not increasing, you do not know how to look at me. If I am looking at you, my peace and joy, vitality, immunity should increase. If it is not increasing, I do not know then how to look, how to see you, how to observe you. Therefore, every moment we should have this memory or relearn, learn again and again. What you have learned yesterday, how to use our eyes and ear and nose and tongue, how to use our legs to walk, how to use our arms to work. Relearn again and again. When you are in the process of relearning again and again, you are seeking and searching again and again how to walk, how to work, and what is the measurement, scale measurement, your power will increase. When your power is increasing, it means yes, you are correct. If I'm interacting with you, your power is increasing, then it is correct. Then you know how to interact with me, how I have to interact with you. This is the way. Kriyayoga science teaches this. If I request all of you, head to what you have it, try to relearn everything. What's the process of walking and sitting and standing and working and resting? What's the process of working with the arms? What's the process of when you're raising your arms, bringing arms down, when you have to work, spreading arms front or backward, anything, you have to relearn. You have to relearn everything, how to taste the food, how to use your nose to smell the things. You have to use your mind and reasoning, how to use your mind and reasoning, relearn. Relearning process is called new dimension. If you're not relearning, if you understand what you are doing is correct, then that is called complete mistake. When we say do not try to, in Hindi, we say basi, बासी खाना मत खाइए. बासी खाना मत खाइए. What is in English? English we say basi khana means what you cooked food yesterday, do not eat today. Try to eat and cook fresh. Okay, all right. Now only concerned about the tongue. What food I cooked in my thought to see you. I want to see you. I want to have communication with you. I cooked some idea and thought and concept before. I am using the same today. That is not allowed. That is called basi khana. That is called yesterday we created, we synthesized some thoughts, idea and concept to understand the things. Today we should improve it. We should have new idea, better idea, new concept of the life, new thing, everything. But that new thing should demonstrate I have more vitality than yesterday. I have more peace than yesterday. I have more joy than yesterday. This is what we have to learn. But people have this understanding, basi khana mat khaiye, iska matlab, what food you have cooked yesterday, do not eat today. You have to eat warm food, cook fresh and eat. Many persons are having cooking the food and eating fresh, but I see in America, I see in Canada, Europe, everywhere. I was somewhere, some person was in the medical school, they are going to study. They used to keep the whole month
roti, they call the bread and rice and everything. Mother was cooking the whole food, packing for a month. That person was taking food for a month, put in the fridge, every day he used to eat from there. That was complete basi food that is cooked before, but that person was bright in studies and healthy physically. Therefore, we have to relearn everything. When it's in Gita written, we have not to eat basi food, we have not to eat yesterday cooked food. Where it is written? Nowhere is there. Give me any verse. Therefore, try to relearn again how to use our sense organs, organ of actions. Organ of action means life force. I have life force in this arm. Life force which is working the arm, that is organ of action working through touch. I am touching the things. How I am touching? Because of the organ of action. What is the organ of action? That is the life force. Therefore, just I am using my arm. How I am using? Because of the life force. And how to use? See, if I am doing some work, I am using unnecessary life force which I don't need it. I have to lift this small piece. Let us. This is. Then I am just putting my complete power of the arms. I have complete feel here to do, just I am as weightlifting. I am misusing the life force. I do not know how to use life force properly. How much life force is needed for digestion, for visual, for hearing, for smell, for taste, for touch, for walking, everything. We should learn how much life force we have to use. If you are unnecessarily using life force, that is the problem. Using life force unnecessarily is called a very great loss. Therefore, most important thing, we have to relearn everything. Every day relearn. What lifestyle was studied today, we have to relearn. Do the same in better style. For example, you are writing something. This is in English. Now let us write more nicely. Okay. It looks better than this. Okay, all right. Try to write better and better, better and better. In the same way, each and every what you are writing, you are cooking the food, you are cleaning the dishes, you are cleaning the clothes, whatever work you are doing, you are talking, you are listening, each and every work should be more and more effective. What meaning of effective? We should increase more life force, vitality, immunity. If I request all of you, from today onwards, learn more and more, everything. When you are walking, God has become earth. You do not see the earth properly, you will slip. And that earth, oh, water was there, I did not see. I went there, there was no water. I returned back smoothly with the imagination, water will not be there, but water was there. I slipped, I got injury. If I did not use my eyes, we should have love for the God. Earth has become God. Each and every moment, something is changing. Therefore, use your eyes when you are walking. Try to observe the place where you are walking. Have full awareness in all activities. That you have to learn it. This is the way how to get real knowledge. By reading book, you cannot get knowledge. By reading book, what you are going to listen, what you are going to understand without working, it will be incomplete. Therefore, I am requesting again you, during all activities, whatever you are doing, from morning to evening, try to experience attitudes more and more. Have more awareness on the object where you are working. If you are working on the floor, or on the roof, or on the ceiling, or on the wall, your mind should be both on you and on the object where you are working, and the tools with which you are working. More and more, you will feel great joy and peace. This is the important point. अच्छी तरह से याद रखिएगा, फिर से सीखिए। कुछ भी काम करिए, अपनी अनुभूति और बढ़ाइए। चलने का काम कर रहे हैं, भगवान पृथ्वी के रूप में, बिना उसका दर्शन किए कैसे चल रहे हैं? अभी आए थे, सब ठीक था,
किसी तरह पानी गिर गया, अब जा रहे हैं फिसल के गिर गए, फिसल के गिर गए, अरे अभी तो पानी था नहीं, किसने गिरा दिया? अरे देखते हुए चलिए, पता नहीं किसने गिराया। आँख है देख के चलने के लिए ना, बिना भगवान को देखे कैसे चले? सिर से पैर की उंगली तक परब्रह्म का रूप है ये, इसकी अनुभूति करते हुए चलिए। इसी तरह थोड़ा सजग हो जाइए, जिससे कम समय में एकदम ज्ञान की बाढ़ आ जाए, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, नौकरी मिले या न मिले, खुद ही नौकरी आपके पास दौड़ के आएगी। कौन सी नौकरी आई ये मत सोचिए, ये मत सोचिए कि नौकरी दौड़ के आएगी, हम तो डॉक्टरी पढ़े नहीं तो कैसे डॉक्टरी आएगी दौड़ कर, हम इंजीनियरिंग पढ़े नहीं तो कैसे इंजीनियरिंग नौकरी आएगी दौड़ करके, ये सब मत सोचिए। नौकरी का मतलब बिजी रहेंगे आप, नौकर क्यों बनना चाहते हैं? बिजी रहिए, आपका ऐसा जीवन व्यस्त होगा, अपने आप व्यस्त होने का एक जीवन, जीवन इतना व्यस्त होगा, इतना अच्छा होगा, इतना आनंदमय होगा, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं आप। बस अभ्यास शुरू करिए, और कोई दिक्कत हो आप हमसे रोज आते हैं क्लास में, हमसे बात करके अपनी दिक्कतों को दूर करिए, और अच्छा एक लिख करके प्रश्न दे दीजिए। ये लिख करके प्रश्न दे देंगे तो हमें बताने में आसानी होगी, वैसे आपके प्रश्नों को उत्तर तो मिल जाता होगा। नाउ वी आर गोइंग टू सिट few minutes. Anybody want to meet, you can come quickly.